Namaskar, welcome to Finastro Cycle by Nitin Bhandari. So once again, how powerful Sun Moon astrology can be, और जब इसको we combine with the our technical indicators, the market overbought zone में था, then it went above the monthly line और आज gap down खुल गया, तो that is another confirmation that market is in trouble. And now see how badly it got hammered today. So news attributes are all later on analysis postmortem कि ये हुआ इसके कारण गिरा. But beforehand you should have a system where you can know कि कहाँ पर market overbought हो गया है, कहाँ resistance हो सकता है, कहाँ support हो सकता है. The simple lines of the market are very important. So this was again a double top zone. This was again डबल टॉप जोन और मार्केट यहाँ पे फेल किया था. दीज टू डबल टॉप जोन्स वर देयर. वहां से नीचे आया, स्टोकेस्टिक्स ओवरबॉट थे एंड इट गॉट सोल्ड ऑफ. नाउ व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर? सो नाउ यू सी दिस इज अ ब्लू लाइन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लाइन. 23,822 इसके नीचे जाके बाउंस किया है. बेस्ट के सिनेरियो में व्हाट आई वांट टू सी इज ये पूरा गैप भर दे मार्केट और फिर बाउंस करे. दैट वुड बी द परफेक्ट सिनेरियो, क्योंकि ये गैप जब भरेगा वहां पे मिड पॉइंट लाइन, दिस ग्रीन डॉटेड लाइन आ रही है. स्टोकेस्टिक्स अभी भी बुलिश जोन में है. कल अगर ये कंटिन्यू डाउनवर्ड करता है तो इट विल एंटर इनटू न्यूट्रल जोन. देन वी हैव टू सी फ्रॉम द न्यूट्रल जोन स्टोकेस्टिक्स शुड टर्न अप. तो ये हुआ निफ्टी का लॉन्गर टर्म डेली चार्ट. नाउ शॉर्ट टर्म डेली चार्ट 90 मिनट चार्ट पे ओवरसोल्ड है. अपर लाइन से बाउंस किया था और अभी अपर लाइन से रिट्रेस हुआ था और अभी we'll wait for it to go to lower line and bounce back. This is a 90 minute chart. Now very short term 15 minute chart जो है, it is highly oversold. कल के लिए जो zones है, these zebra lines, these are important lines. तो कल के लिए जो zone है market के लिए, if it goes below this point which is 23,710, ये फ्यूचर चार्ट है. 23,710 फ्यूचर्स बेसिस पे इसके नीचे जाके बाउंस करेगा, देन इट हैज सम पोटेंशियल फॉर अगेन गेटिंग सम काइंड ऑफ अपसाइड मोमेंटम. नाउ कल बात किया था हमने हैवी वेट्स का एंड हाउ हैवी वेट्स डिसाइड मार्केट स्ट्रक्चर. तो कल ही देयर वाज अ सिग्नल फ्रॉम रिलायंस कि इट इज नॉट सस्टेनिंग. अगर आज इसके नीचे खुला, गैप डाउन खुला, एंड सी व्हाट हैज हैपेंड, इट हैज केम डाउन क्वाइट लो नाउ 1278. तो ये एक मेजर फैक्टर था मार्केट के नीचे आने के लिए. नाउ 1254 इज द लोअर लाइन, मंथली लाइन. यहाँ पर वी विल keep an eye for any kind of possible entry. Another one, HDFC Bank. I give a lot of importance to these stocks क्योंकि ये हेवी वेट्स हैं. HDFC बैंक आज मिड पॉइंट लाइन से सेल ऑफ आया है एंड दिस इज नॉट अ गुड कैंडल. इसको जो भी बोलना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी या इन्वर्टेड हैमर या हैमर, परफेक्ट हैमर, so it is not a good sign. It should not come back below 780. 780 के नीचे गया तो then again it is in the bear trap. HUL सेम स्टोरी, मिड पॉइंट लाइन, ये ऊपर का लाइन क्रॉस नहीं किया, मिड पॉइंट लाइन एंड गॉट सोल्ड ऑफ. सो ऑल द स्टॉक्स विच विल बी सीइंग दे हैव द सेम स्टोरी टुडे कि हर जगह से either they got sold off from the any important line. Now this is a भारती एयरटेल. कल ही मैंने बात किया था कि ये ऊपर जाके it got sold off. Now you see what has happened, but still it has managed to close above 1885 which is a short term line. 1864 के नीचे then there is a lot of more trouble coming. ICICI Bank, same story. Yesterday it went above, now today it got sold off. So निफ्टी को गिराने में you should find the stocks की क्या stocks का maximum impact है. And the heavyweights play a very important role. L&T also, it got heavy selling after midpoint line crossed and now it is open for 3740 or 3680. That is the zone. These are all futures. TCS आज शायद रिजल्ट है, यस, और
इट हैज गॉट सोल्ड ऑफ, तो बेटर कल पोस्ट रिजल्ट जो भी रिएक्शन मार्केट कर रहा है इसके नीचे जाके, मंथली लाइन के नीचे जाके बाउंस करे, दैट इज द गुड सेटअप फॉर टीसीएस. द सेम इज फॉर इन्फोसिस. इन्फोसिस चार्ट इज बेटर देन टीसीएस. तो लाइन के ऊपर है अभी भी, 1057, 1057 के ऊपर है. तो उसके नीचे जाएगा देन देयर इज अ पेन, और नीचे का लाइन है 980. So guys, that's all for now. Bye bye.